जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी मुझे सिलेबस जो मिला है साइंस के लिए रावलपिंडी वालों का, जो फोर्ट रोड का मिला था, फोर्ट रोड कैंपस का, तो उसके मुताबिक मैंने वीडियो तो बना दी है। अगर आप लोगों को किसी और, आप लोगों का कोई और हो तो वो भी बताएं इंशाल्लाह। वैसे तो मैंने तकरीबन सारी कंप्लीट की हुई हैं। ये थोड़ी सी एक रिवीजन सी मैं करा दूंगा इसकी। आप लोग इसको अगर प्रिंट आउट निकाल कर देख लें तो ये, अगर ये वाला आपका यही सिलेबस है तो सिर्फ दो सफ़े हैं, आप 4-5 दफ़ा पढ़ोगे इसको तो आपका बिल्कुल तैयारी हो सकती है इंशाल्लाह आपकी इससे। तो इसमें चैप्टर जो है आपका है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। टेक्स्ट बुक पेज का जो है ना 106 टू जो है ना 112 है। और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टेक्स्ट बुक पेज का 113 टू 115 है। एक्सरसाइज पेज 119, इसमें D3 4 और EQ 235 क्वेश्चन जो है ना FQ में F के जो है क्वेश्चन 1 to 3 और कंपोनेंट्स ऑफ वेदर, ये टेक्स्ट बुक पेज का 123 टू 126 है। और एक्सरसाइज पेज 133 पे, और QD 23 EQ 12 और FQ 1 CP। ठीक है जी। ये वाला आपके जो है ना हमें सिलेबस दिया गया, तो मैंने कोशिश करूँगा कि जी आपको ये वाला सारा पढ़ा दूँ इसमें। अगर आप लोगों को कुछ इसमें कोई मसला हुआ तो मैं वैसे इसमें इसके नोट्स शेयर भी कर दूँगा ग्रुप में भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले एक बात आप जहन में रखिएगा कि ये जो मैंने इसमें ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कुछ बुक्स में हैं, कुछ लोगों को जो बुक्स इशू हुई हैं कुछ में नहीं है, तो मैंने उसको रेड लाइन में कर दिया। अगर आपकी बुक में है तो वो वाला भी आप कर लीजिए, अगर नहीं है तो फिर आप उसको बेशक छोड़ दीजिएगा। उसको मैंने रेड कलर में कर दिया। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये है जी चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेदर, पेजेस 123 टू 126। नेम द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेदर। ये है जी आंसर क्या है इसका। द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेदर आर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज टेम्परेचर, हाउ इज इट मेजर्ड। ठीक है, आंसर इसका ये है कि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हीट और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। इट इज measured using a thermometer, which is a device that to indicate the temperature. What is air pressure? How does it affect the weather? ठीक है जी, आंसर इसका ये है कि एयर प्रेशर इज द फोर्स exerted by the weight of the air molecules on the surface of the earth. It affects weather by causing air to move from areas of high pressure to areas of low pressure. ठीक है जी, which creates winds. Areas of low pressure are associated with cloudy and rainy weather, while the areas of high pressure are associated with clear and sunny weather. ठीक है जी। फिर है क्वेश्चन कि डिफाइन ह्यूमिडिटी, हाउ इज इट मेजर्ड। आंसर इसका है कि ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स present in the air. It is measured using a device called a hygrometer, which can measure the amount of water vapors in the air as a percentage of the maximum amount of water vapor that the air can hold at a particular temperature. ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विंड, हाउ इज इट फॉर्म्ड। ठीक है, आंसर है विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरियाज ऑफ लो प्रेशर. It is formed due to the difference in air pressure caused by uneven heating of the earth's surface by the sun. The rotation of the earth also affects the movement of wind, causing it to curve and form patterns such as trade winds, etc. अब ये क्वेश्चन कुछ में है कुछ में नहीं है। व्हाट इज द Coriolis effect, how does it affect the direction of wind? आंसर इसका ये है कि the Coriolis effect is the apparent reflection of winds and other moving objects due to the earth's rotation.
It causes winds to curve to the right in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. This effect is responsible for the formation of pattern of winds such as trade winds etc. ठीक है जी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. आंसर इसका है, weather refers to the short term atmospheric conditions in a particular place and time, such as temperature, humidity, wind, and precipitation. Climate, on the other hand, refers to the long term average weather conditions in a particular region, including factors like temperature, rainfall, and patterns and wind patterns. फिर है कि जी व्हाट इज़ अ साइक्लोन, हाउ इज़ इट फॉर्म्ड. आंसर इसका बनता है कि ए साइक्लोन इज़ अ लार्ज स्केल वेदर सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर at its center with winds rotating around it in a counterclockwise direction in the northern hemisphere and in a clockwise direction in the southern hemisphere. Cyclones are found when warm, moist air rises and cools, causing water vapors to condense and form clouds. The release of heat energy during this process causes the air to rise further and create a low pressure area at the surface, which draws in more warm, moist air and causes the system to grow in size and strength. ठीक है जी. ये मैंने आपको जो है ना तकरीबन आंसर्स इसके लिख दिए हैं. इसका ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इनके जो आंसर्स हमें जो बताए गए थे जो सिलेबस वो वाले. ये आंसर्स देने के बाद मैं आपको इसका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का भी एक पेपर जो है ना वो बना दूंगा इंशाल्लाह. वो आप मगर पहले इसको अगर पढ़ लेंगे ये आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि ये आप लोगों का दिया गया हुआ है सिलेबस. ठीक है जी. आ जाता है जी के आंसर टू द क्वेश्चंस एडवेंचर्स इन साइंस 4 में जो है ना कंपोनेंट्स ऑफ वेदर. ठीक है. ये QD2 है, व्हाट इज थंडरस्टॉर्म, हाउ इज इट फॉर्म्ड. ठीक है जी. आंसर क्या है इसका, ए थंडरस्टॉर्म इज वेदर फिनोमेना कैरेक्टराइज्ड बाय थंडर एंड लाइटनिंग along with heavy rain, strong winds, and sometimes hail. Thunderstorms are formed when warm, moist air rises and cools, causing water vapors to condense and form clouds. As the air continues to rise and cools, it may form a ये है क्यूमुलोनिबस cumulonimbus cloud, which is a type of cloud that can produce thunderstorms. The rapid upward movement of air within the cloud creates electrical charges which can lead to lightning. Thunder is the sound produced by the rapid expansion of air due to the heat generated by lightning. फिर question D3 है, what is a tornado? How is it formed? A tornado is a violent rotating column of air that extends from the base of a thunderstorm to the ground. Tornadoes are formed when warm, moist air from the Gulf of Mexico meets cold, dry air from Canada, creating a strong temperature gradient. This causes the warm air to rise rapidly and form a rotating updraft within a thunderstorm. If the updraft becomes strong enough, it can tilt the rotating air and create a funnel cloud. If the funnel cloud makes contact with the ground, it becomes a tornado. ठीक है जी. फिर है जी, what is the difference between a hurricane and a typhoon? ठीक है. आंसर है, a hurricane and a typhoon are both large rotating tropical storms, but they are called different names depending on where they occur. ठीक है जी. Atlantic Ocean
in the Atlantic Ocean and the Eastern Pacific Ocean, such storms are called hurricanes, while in the Western Pacific Ocean, they are called typhoons. फिर EQ2 है कि what is the eye of a hurricane? Answer is the eye of a hurricane is a relatively calm and clear area at the center of the storm. It is surrounded by a ring of intense thunderstorms known as the eye wall. The eye is formed by the sinking of air at the center of the storm, which creates a zone of low pressure. The size of the eye can vary from a few kilometers to over 100 kilometers in diameter. ठीक है जी. फिर FQ1 है, what are some of the hazards associated with thunderstorms? आंसर है इसका, thunderstorms can produce a number of hazards including lightning strikes, strong winds, heavy rain, and hail. Lightning strikes can be deadly, while strong winds can cause damage to buildings and trees. Heavy rain can lead to flooding, and hail can damage crops and vehicles. Overall, it is important to take thunderstorms seriously and take precautions to stay safe during such weather events. फिर एक क्वेश्चन है FQ लास्ट वाला कि what are some of the hazards associated with tornadoes? Tornadoes can be extremely dangerous and destructive. They can produce winds in excess of 300 km per hour, which can cause buildings to collapse and vehicles to be thrown along a long distance. Tornadoes can also produce large hail and heavy rain, which can cause flooding. It is important to take tornado warnings seriously and seek shelter in a basement or an interior room on the lowest level of a building. ठीक है जी. अच्छा, ये मैंने आप लोगों को घबराने की इसमें बिल्कुल परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है कि जी ये मैंने आपको इतने मुश्किल से क्यों कर दिए. ये मैंने आपको सिर्फ बताया है, आपकी एक रिवीजन सी हो जाएगी. इन्हीं क्वेश्चंस से मैं आपको भी आपके ऑब्जेक्टिव भी बना के दिखाता हूँ, ऑब्जेक्टिव का पेपर है किस तरह का. ठीक है.